मैंने इसके 2 वीडियोस बनाए थे, उसमें हमने ये कंप्लीट किया है। सो अभी कंप्लीट करेंगे ये वाला टॉपिक। वेलकम बैक टू द चैनल विभाती पवन कुमार। दिस इज़ पवन कुमार एंड ये टॉपिक है चार्टेड अकाउंट्स का। सो जो टॉपिक है इंडियाज़ 4 ट्रिलियन टू 30 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी शिफ्ट, इसके कॉन्सेप्ट पे है ये पूरा पैराग्राफ। अभी यही लास्ट होगा, इसके बाद में बुक मुझे लौटाना है। तो मैं इतना तो पढ़कर आपको सुनाना चाह रहा हूँ। द नेशन इज चार्टिंग एन एम्बिशियस कोर्स टुवर्ड बिकमिंग ए 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी ड्रिवन बाई इनोवेशन, resilience and collective aspiration. The I in India stands for the indomitable spirit and capability of every Indian, each contributing with zeal to the nation's progress. The past decade has witnessed a remarkable and multifaceted transformation, marking an era of inclusive and comprehensive growth. From the digital revolution to infrastructure expansion, from startups to space missions, India's journey reflects a vision anchored in self-reliance and global relevance. एक्चुअली सो आई एम सॉरी कि मैं इतना घटिया प्रोनाउंसिएशन भी कर रहा हूँ कुछ वर्ड्स का। एंचोर्ड मुझे करेक्ट मालूम नहीं। अगर आपको इसमें कुछ भी ज़ील, इसके मीनिंग्स मालूम हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। एज द कंट्री embraces emerging technologies, strengthens governance and empowers its youth, it stands tall as a beacon of opportunity and inspiration. ये है अगला वाला पैराग्राफ। एज इंडिया strides toward its vision of becoming a global powerhouse and a fully developed nation, it is harnessing the increasing entrepreneurial spirit that is surging across its landscape. Central to this transformation is the recognition that every Indian is capable of driving change, innovation and progress. To truly unlock this potential, and regulatory ecosystem must evolve from one of control to one of facilitation, simplifying regulations, reducing bureaucratic hurdles and minimizing human intervention will create a fertile ground for business to thrive. अभी पढ़ेंगे थर्ड पैराग्राफ। rationalizing and streamlining in the goods and services tax GST के बारे में further enhances transparency and ease of doing business. Additionally, improving access to credit and easing borrowing norms will empower aspiring entrepreneurs, particularly those brimming with ideas but constrained by financial limitations. Lowering tariffs to boost manufacturing, energizing the Make in India initiative, and strategically investing in research and development are essential levers for long-term economic resilience. रिसिलेंस का मीनिंग भी एक बार मुझे बताइए कमेंट कर। लेवर्स क्या है मुझे एक बार बताइए। तो एक्चुअली मुझे आपको बताना चाहिए कि इसके मतलब क्या होते हैं, लेकिन ये सब रिवर्स में रहता है मेरा वीडियो। जो कि आप लोग मुझे समझाते हो वो मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आपको पूछता हूँ। ए फोकस्ड पुश टू develop India's rich tourism potential will not only generate revenue but also create employment and cultural exchange.
These strategic reforms must form the cornerstone of India's roadmap to a $30 trillion economy. ये IE आया ना यहाँ पे, आपको जूम कर दिखा रहा हूँ। सर इसका मतलब भी मुझे अपने इंग्लिश टीचर ने तो बताया था, लेकिन मैं फिर भी भूल गया हूँ। आपको मालूम हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। An India that is agile, inclusive and globally influential, ये और एक पैराग्राफ है। While growth remains the headline, inclusivity must be its subtext. India's economic vision must translate into tangible benefits across rural and urban, formal and informal, digital and traditional sectors. As the clock strikes the hour, the role of chartered accountants now involves beyond number crunching into economic stewardship. Chartered accounts should act as a key enablers in fostering equitable tax structures, ensuring transparent implementations of schemes and promoting the efficient utilization of financial resources. By effectively communicating tax scheme to the public, they contribute towards enhancing the ease of living and facilitating access to essential amenities for the broader population. Moreover, chartered accountants are amplifying financial literacy, promoting responsible borrowing practices, and guiding grassroots institutions in fostering social inclusivity and advancing sustainability. Reporting other than its role of reforms driven value creation in the economy. इसमें ये बताया जा रहा है कि मेन इंडिया का डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, कहाँ तक हो रहा है, और जो अपना GDP है ना, GDP बढ़ने का तरीका भी बताया गया है, और मेन इम्पॉर्टेंट GST ये सब का बताया है। जैसे कि चार्टेड अकाउंट्स में ऑलमोस्ट जो भी है वो बिजनेस रिसोर्सेस रिलेटेड होता है, जो कि उसका टॉपिक है। दिस इज़ द जनरल टॉपिक एक्चुअली। सो इसके बारे में डीप में आपको सब्जेक्ट बुक में मिल जाएगा, जो भी चार्टेड अकाउंट्स का सब्जेक्ट बुक होता है उसमें। In today's dynamic global environment, chartered accountants are expected to possess a deep understanding of international financial reporting standards, global taxation systems, cross-border regulatory frameworks, and involving ESG requirements. In an era defined by technological advancement, fluency in emerging tools such as blockchain, artificial intelligence, and data analytics is equally vital. With strong financial acumen and steadfast ethical principles, Indian chartered accountants are well positioned to seize global opportunities through continuous upskilling and strategic adaptability. Over the last 76 years, the institute and the profession have played a substantial role in nation building, guiding businesses through regulatory changes, auditing public and private entities, ensuring tax compliance, and promoting financial integrity. In an economy that's rapidly formalizing and digitalizing, the relevance of the CA profession have only intensified. From updating the CA curriculum to incorporating electives like AI and forensic audit and forging mutual recognition agreements (MRAs),
With global bodies to expanding international chapters, ICAI is actively sculpting the globally competitive Indian CA Institute's efforts in sustainability reporting, digital assurance frameworks, and accounting reforms in public sector entities further reinforce its role as an institution of national and international relevance. The dual mandate of nation building and globe competitiveness demands that CAs not only respond to changes but lead them with innovation, integrity, and insight. The true measure of a nation's progress is not merely in its GDP but in the strength of its institutions and professionals who uphold transparency, accountability, and इंक्लूसिव प्रॉस्पेरिटी। ये तो आपको समझ में आ गया होगा ना। लास्ट का बोल रहे जीडीपी के साथ साथ इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोफेशनल्स भी हैंडल करने से देश आगे बढ़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।